Hello student, today we are going to start your English subject in standard 7th. Okay, today we are learning the lesson number 6, second part. Okay, so let us start. The customer wants something that has wings. He spends his 10 years earning on a pair of birds. What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has even seen. जो ग्राहक थे उसने पंख वाले जीव की मांग करता है और वह अपनी 10 वर्षों की जो कमाई होती है वो जोड़ा पक्षी खरीदने में लगा देता है। पक्षियों को खरीदकर वह ऐसा विचित्र काम करता है कि जिसे पुर्सेल ने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया। The man's shinny shoes squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitting but obviously new. He had a startling glance and close-cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadow shop. जो उस व्यक्ति ने जो ग्राहक थे वो कैसा लगता था, तो उस व्यक्ति ने चमचमाते जूते कर्कश आवाज़ करते आगे बढ़ा। उसका सूट कैसा था? एकदम घटिया था, फिटिंग भी ठीक न थी पर देखने में नया लग रहा था। उसकी दृष्टि इधर उधर घूम रही थी और उसके बाल छोटे कटे थे। पुर्सेल की ओर ध्यान न देकर उसने अपनी दृष्टि उस मंद रोशनी वाले दुकान में दौड़ाई। ओके। A nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. I see by the paper where are in for a cold spell. Now what was it you wanted? जो बहुत असुखद प्रभात है, दुकानदार बोला। उसने अपने तरबूज जैसे तोंद मतलब कि पेट पर दोनों हाथ रख लिए थे और वह मुस्कुराया। मैंने आज की समाचार पत्र में पढ़ा है कि ठंड बढ़ने वाली है। हाँ, तो आप क्या खरीदने चाहते हो? So the man started closely at Mr. Purcell as though just now aware of his presence. He said, I want something in a cage. तो जो ग्राहक था उसने क्या बोला कि मिस्टर पुर्सेल को गौर से देखा और मानो उसने अभी अभी पुर्सेल की उपस्थिति को महसूस किया था। वह बोला, मैं पिंजरे में बंद कोई जीव चाहता हूँ। Something in a cage? Mr. Purcell was a bit confused. You mean some sort of pet? I mean what I said, spanned the man. Something in a cage, something that is small. तो उसने बोला कि जिस पिंजरे में बंद कोई जीव। पुर्सेल विचार में पड़ गए कि वो क्या कहना चाहता था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। इसीलिए उसने बोला कि आपका आशय है कि किस प्रकार के पालतू जीव से। तो उस जो ग्राहक था उसने बोला कि मेरा अर्थ वही है जो मैंने कहा है। उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा, पिंजरे वाले जीव जो छोटा भी हो, ऐसा उसने कहा। ओके। I see, hastened the storekeeper, not at all certain that he had. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat, perhaps. I have some very nice what rats. No, said the man, not rats. Something the wings, something that falls. A bird, exclaimed मिस्टर पुर्सेल। तो जो मिस्टर पुर्सेल था उसने बोला कि समझ गया। दुकानदार ने जल्दबाजी दिखाई, पर अभी भी वह निश्चित रूप से नहीं जान पाया था कि उसे क्या उठाने जा रहा है। उसकी आंखें गंभीर होकर सिकुड़ गई थी तथा उसके होठ मुड़ गए थे। अब मुझे सोचने दीजिए, शायद आपको सफ़ेद चूहे चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे पास कुछ अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। तो जो व्यक्ति था उसने बोला कि नहीं, चूहे नहीं, कोई पंख वाले जीव चाहिए, ऐसा जीव जो उड़ सके। पक्षी पुर्सेल खुश होकर बोल उठा। ओके।
नेक्स्ट क्या होता है कि ए बर्ड्स ऑल राइट द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू ए स्पेंटेड केज विच कंटेन टू स्नोवी बर्ड्स डव्स हाउ मच फॉर दोज 550 came the prompt answer and a very reasonable price. They are a fine pair. 550. The man was obviously crestfallen. He hastily produced a $5 bill. I had liked to have these birds, but this is all I have got, just $5. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. सो उसका हुआ कि पक्षी ठीक रहेगा। ग्राहक ने अचानक एक लटके हुए पिंजरे को इशारा किया जिसमें 2 सफ़ेद रंग के पक्षी थे। काफ्ता, उनकी क्या कीमत है? 55 सेंट तुरंत उत्तर मिला और उन्होंने बोला कि और मूल्य उचित है, सुंदर जोड़ा भी है। $5.50। व्यक्ति उदास हो गया। उसने संकोचपूर्वक एक $5 का नोट निकाला। मैं उन पक्षियों को खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे पास बस इतना ही पैसे है, मात्र $5। मन में मिस्टर पुर्सेल ने शीघ्र ही हिसाब लगाया। उसे लगा कि 50 सेंट कम करके भी उसे खासा लाभ हो रहा है। उदारतापूर्वक वह मुस्कुरा दिया। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. I will take them. He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage, and handed it to his customer. The man cocked his head to one side, listening to the constant chitting, the rushing scurry of the shop, the noise. He blurted, "Does not it get you? Noise?" What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. So the customer glared. I mean, all this cage stuff drives you crazy, does not it? Mr. Purcell drew back. Either the man was insane or drunk. He said hastily, Yes, certainly, I guess so. प्रिय सज्जन, यदि आप इन पक्षियों को इतना अधिक चाहते हो तो आप निश्चित रूप से इन्हें $5 में खरीद सकते हो। मैं इन्हें लूँगा, ऐसा किसने बोला? तो जो ग्राहक था उसने $5 पटल पर रख दिए गए और पुर्सेल पैर के अंगूठों पर लथड़ाते हुए खड़ा हुआ। पिंजरों को उसने उतारा और ग्राहक को सौंप दिया। व्यक्ति ने अपना सिर एक और झुकाया। वह उन पक्षियों का लगातार चहकना सुन रहा था। दुकान में हो रही हलचल भी वो सुन रहा था। यह शोर, वह बोला, क्या यह आपको बुरा नहीं लग रहा है? जो ग्राहक था वो मिस्टर पुर्सेल को पूछ रहा था। शोर? कैसा शोर? मिस्टर पुर्सेल हैरान था। उसे तो कुछ भी असामान्य नहीं सुनाई दे रहा था। ग्राहक ने उसको घूर कर देखा। मेरा अर्थ है इन पिंजरों के पक्षियों का शोर। क्या यह आपको पागल नहीं बना देता? मिस्टर पुर्सेल ने पीछे हटा। इन्हें लगा कि यह व्यक्ति या तो पागल है अथवा नशे में है। उसने शीघ्रता से बोला, हाँ, अवश्य, मैं भी यह सोचता हूँ। ओके, द नेक्स्ट। Listen, the starting eyes came closer. How long do you think it took me to make the $5? The merchant wanted to order him out of the shop, but oddly enough, he could not. He heard himself dutifully asking, Why? How long did it take you? The other laughed. 10 years at hard labor. 10 years to earn $5.50 a year. It was best. Mr. Purcell decided to humor him. My 10 years, that's certainly a long time.
They give you $5, laughed the man, and cheap shit, and tell you not to catch again. Mr. Purcell mopped his swing brow. Now about the care and feeding of your doves, I would advise. सो सुनिए, गुरती आंखें और निकट आ गई। क्या आप जानते हैं कि इन $5 को कमाने में मुझे कितना समय लगा? ये कौन पूछ रहा था? जो ग्राहक थे वो। तो दुकानदार चाहता तो था कि इस व्यक्ति को दुकान से बाहर कर दे, पर विचित्र बात यह हुई कि वह उसे बाहर जाने का आदेश भी नहीं दे सकता था। उसने स्वयं को कर्तव्यवश बोलते सुना, क्यों, आपको कितना समय लगा? अजनबी हंस दिया। 10 वर्ष कठिन परिश्रम। इन $5 को कमाने में मुझे 10 वर्ष लग गए। 1 वर्ष में 50-60 की दूर से में मजदूरी मिली। पुर्सेल ने सोचा कि इस व्यक्ति को खुश ही रखना बेहतर होगा। 10 वर्ष, यह तो बहुत लंबा समय होता है। अब जेल में आपको $5 देते हैं। व्यक्ति हंसा और एक सस्ता सा सूट और आपको बताते हैं कि पुनः पकड़े मत जाना। मिस्टर पुर्सेल ने बोहा से पसीना पोंछा। अब इन काफ्तों की देखभाल और दाना चारे के बारे में आपके सलाह दे दूँ। ओके, द नेक्स्ट क्या होता है? द मैन swung around the stacked abruptly from the store. Purcell signed with sudden relief. He waddled to the window and started out. Just outside, his peculiar customer had halted. He was holding the cage shoulder high, starting at his purchase. Then, opening the cage, he reached inside and drew out one of the doves. He tossed it into the air. He drew out the second and tossed it after the first. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the windy city. For an instant, the Liberator's silent and lifted gaze watched after them. Then he dropped the cage. He shoved both hands deep in his trouser pockets, handed down his head and stuffed away. The merchant's brow was perked with so desperately had the man desired the doves that he had let him have them a reduced price, and immediately he had turned them loose. Now, why? Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. So, क्या हुआ था कि वह व्यक्ति गुम गया तथा सहसा गर्वपूर्वक स्टोर से बाहर निकल गया। पुर्सेल ने राहत की सांस ली। वह खिड़की के पास गया और बाहर चौंका। दुकान के बाहर ही वह ग्राहक रुक गया था। वह पिंजरे को कंधी तक उठाते हुए था तथा अपनी खरीदी वस्तु को देख रहा था। फिर उसने पिंजरा खोला। हाथ अंदर डालकर उसने एक काफ्ता बाहर निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया, जिसने दूसरा पक्षी निकाला और पहले के पीछे पीछे वो भी उड़ गया। ये आप देख रहे हो इस पिक्चर में। वे दोनों पक्षी पंखों के हवा चलित गेंद की भांति ऊपर उड़े और झाड़े वाले शहर की गुंगले आकाश में अदृश्य हो गए। एक क्षण को उन्हें मुक्ति देने वाला चुप रहा। वह पक्षियों को देखता रहा। फिर उसने पिंजरा गिरा दिया। उसने दोनों हाथों को पैंट की जेबों में डाला, सिर झुकाया और चल दिया। दुकानदार की बौहें उजलने में सिकुड़ गई। इतनी चाव से उसे काफ्ता पक्षियों को पाने की चाहत की थी कि दुकानदार को उनका मूल्य भी कम करना पड़ा
और पश्चात उसे व्यक्ति ने पक्षियों को मुक्त कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया? पुरसेल बुदबुदाया। उसने बुरी तरह से अपमानित महसूस किया। So your story is completed and I hope you are understanding this story. Okay, and then next we solve this comparison check. So आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नहीं लिखना है. एंड देन सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाई डिड ही वांट. वो जो ग्राहक था वो कैसा लगता था और उसे क्या चाहिए था. So its answer is the stranger who came to Mr. Purcell's shop had been released from jail after 10 years of imprisonment. His suit, though new looking, was cheap and ill-fitting. He had close-cropped hair. His eyes moved all around in the shop. He wanted to purchase something in a cage. Okay, the next third question is, the man insisted on buying the doves because he was fond of birds. Do you agree? So its answer is no. The man was neither fond of birds nor did he insist on buying the fair doves. He only wanted some birds in a cage. Okay, then next, how had he earned the $5 he had? So its answer is, the man had spent 10 years in prison. He had to work hard. He was paid only $50 per year. He left the jail with just $5 and a cheap suit. Okay, the next last question. Was the customer interested in the care and feeding of the doves he had bought? If not, why not? So its answer is no. The man had no love or liking for the doves. He did not mean to keep them as pets, so he paid no attention to what Mr. Purcell said about the feed and care of birds. Soon after slipping out of the shop, he freed the birds and dropped the cage. Okay, so our exercise and story is completed, and I hope you are understanding this exercise and story.